audible? Lovely. Before starting the event, I have a small request. Can all of you come ahead a little? Two reasons. Because one is that the performer feels good that there are many people listening to him and he can see people. And two, this is getting recorded live, so it looks like there are many heads coming in the camera. So even if there aren't many people, it looks like there are a lot of people. The only stupid part of this entire conversation was that I forgot we're live, so I kind of let it out to people that there aren't too many people, but it's okay. It's cool. How are you guys doing? Good. How many people from Bombay? Oh, nice. The previous open mic had, I think, most of them outside Bombay. Well, technically and geographically, you can call me also outside Bombay because I come from this place which is very close called Thane. It takes a lifetime to reach here. But yeah, can we have a nice round of applause first? Yeah, nice. I just feel like the monsoon and the silence and the and how pleasant this room is, you guys have gone completely quiet. So, how many of you first time here? Okay, 1, 2 people. So you need to make 2 people feel like stars. Yeah? Awesome. How many people attending an open mic ever for the first time in their life? Oh, great. Oh, okay. Lovely. Nice. Nice. Crazy. But I think we've come a far way because back in the day when I hosted over here, at that time, most people performing and most people listening were the same set of people. And everyone was here for an open mic for the first time. Are we comfortable with English? Yes. क्योंकि मेरा हिंदी बहुत बेकार है और प्रॉपर बॉम्बे वाला हिंदी है जिसमें ना पूरा हिंदी है ना पूरा उर्दू है ना पूरा मराठी है एंड उसके साथ साथ एक स्लाइट साउथ इंडियन एक्सेंट भी है सो यू जस्ट नो आई एम a South Indian living in Bombay, doesn't know to speak any language properly. I manage a bit of English. Yeah? Okay, great. So quickly before we start, a few rules. And then we can talk to a few of you, what do you guys do and all of that, and we can slowly slide into the show. Is that good? Yes. First rule, there's this, I learned this word in one of the shows, dopamine yantra. Usko zara silent mein dal de. Typically avoid taking it in hand when someone's performing because I being here, so I know what the performer can see and you are hardly 8 people and all of you are within the purview of my eye. So it just feels a little disrespectful when someone's performing if you look into your phone. So that. 1. 2, since you guys have been to open mics, you already know it. If you like something, you can go snapping. Can we all snap once? Yeah, all of us? Louder? Nice. Great. If the performer is an Urdu or Hindi performer, they also like things like wah and few words and repeating lines. They're very happy with it. And I mean that with no offense. Man, I just realized अभी host करते करते थोड़ा tension आते कि कौन किस बात का offense ले लेगा. And ऊपर से live वाइव सब हो रहा है तो पता नहीं कब cancel हो जाएगा किस बात के लिए. Life was easier before. How many of you here are millennials? Like millennial is between 87 to 97 born. 2 people. Okay, how many? Gen Zs? Awesome. Boomers? Good. That's great. No, it's always fun to have this mix of everyone there because the reason I'm asking this is because last time I started hosting and I started cracking jokes and all, full jokes on Gen Zs and all. And then after about 5 minutes, I realized a few people are laughing and a few people are taking some offense. That's when I asked them what is the average age group, and there were only 2 men who were millennials. Everyone else were Gen Z. So it's kind of tricky. And Gen Zs don't give a rat's ass about anybody. So if they don't like you, they don't like you. Then the next day, the entire social media community will know that they don't like you and you are not supposed to be liked. But millennials are scared kids. If you push them too much, थोड़ा rebel आएगा अंदर से वो भी ऐसा बुझते हुए कैंडल जैसा मर जाएगा
क्योंकि बचपन में हम लोग को अभी भी डर से बड़ा किया, वैसा फ्रीडम से सब बड़ा नहीं किया कि वॉट एवर वी वॉन्ट फील टू एंड लाइक द वर्ल्ड इज़ लाइक, ऐसा नहीं किया हम लोग. ऑप्शन भी नहीं था इस चीज़ का. आई थिंक आर क्लोजेस्ट एवेन्यू टू फ्रीडम वॉज अगर 16 या 17 में मम्मी पापा के साथ थोड़ा सा दारू टेस्ट कर लिया, तो देन दैट वाज द क्लोजेस्ट थिंग टू फ्रीडम फॉर अस. बट Gen Zs are way cool. They have a lot of freedom and yeah, okay, anyway, this is just my rant towards Gen Zs and millennials, has nothing to do entirely. So are we good to start the show? Can we have the first performance? Great. Before that, I will kind of cue this in. Let's make this a little interesting. Let every performer come and go and we'll have a parallel story running. So basically I start with the story. Okay. देन बीच में एक परफॉर्मर आएगा, वो उसका परफॉर्मेंस करेगा, फिर अपना स्टोरी आगे बढ़ेगा. वील ट्राई समथिंग लाइक दैट. वर्क्स? ऑसम, ग्रेट. कैन आई हैव अ नाइस राउंड ऑफ अप्लॉज बिफोर आई स्टार्ट वंस? नाइस. ओके, सो this was back in school in the 8th grade. A fun fact about my life is I have lived too many stories practically to be a storyteller and tell them, which roughly translates to बचपन में बहुत बकचोदी किया तो story बहुत पढ़े and I'm a storyteller right now. So this once back in the day I was in my friend's society and she was just introducing me to all her other friends over there and all. So there were 3-4 people over there and she was introducing me to all of them. But on one corner there was this girl sitting. Quaint, silent, extremely beautiful. She even had a dimple falling on her left cheek. She looked adorable and she didn't talk at all. For some reason, she was completely silent. And I kept looking at her. After like about 5 minutes or something, I walked up to her and said, "Hi, I'm Krishna. You look very pretty. Cute. I like a dimple." And fun fact, as a kid I was extremely overconfident. God knows why. It was just that मुझे कुछ पसंद है तो उसको पता चलना ही चाहिए. And so then I met her friends and all that happened and then they left and then this friend of mine who was introducing me to her friends, I told her, सुनना यार, लगता है मेरे को प्यार हो गया. Now fun fact, millennials know this, हमारे बचपन में क्रश का कॉन्सेप्ट नहीं था. We didn't understand terms like situationship, फिर क्या bread crumbing, we don't know that. बस we meet a girl, we fall in love. The spectrum is as simple as that. So I was like, यार मुझे प्यार हो गया. And she's like, my friend is like, कृष्णा मत यार, 2 हफ्ते पहले तेरे को प्यार हुआ था, ऐसा मत कर. It's like नहीं honestly ये मिल गया मेरी लाइफ में, सब हो गया, मेरे को यही लड़की चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए. And she was like, dude, she's 3 years elder than you. She will not even want to talk to you. Why do you want to try it? And I'm like, let her talk to me once. Then you see what will happen. Because like I said, overconfidence was way too much. So, as smart as I was, in some way I figured out and I got her number also. And अब number मिल गया तो message तो करना ही है तुरंत. But you know, this was that time when you got about 350 messages for 35 rupees wala time. So you couldn't play around a lot. You had to be cutthroat, to the point, extremely smart. If you crack it at once, you do. It's worse than an elevator pitch. You guys know what's an elevator pitch? Yeah, you get 15 seconds for that. This is one message you will get. If you screw it up, she'll never reply to you also. ऊपर से completely new person. So then, number मिल गया, जोश में I sent her a text saying, "Hi, remember me? You met me at this one society. My name is Krishna. I think you are very cute. Can we talk?" भेज दिया मैंने message. Wow, this is crazy. To which, after a bit, oh nice, बीच में सब बंद हो गया, अच्छा लगा. Anyway, to which he replied immediately. But then I'll come to that after we have our first performer for the afternoon, right? Okay. So every time I'm announcing someone on stage, keep clapping for them till they are here.
either they should be overwhelmed or nervous, or just feel like a star. And whoever is coming on stage, be rest assured, if this is your first time, just kill it. You have 4 minutes time. There's a clock over there. Don't go overboard 4 minutes, because everyone should get a chance. The last time I was hosting, someone went for 7 minutes, and then beach mein we had to be like, just get in, and I don't want to do all that, please. So 4 minutes, stick to that. Take your own time. If you fumble, it's okay. It's great. This is an open mic. This is meant to fumble. So can we have a huge round of applause for Janvi? Okay, hi everyone. I'm Janvi. So my poem is not about love, not the kind they write in the book anyway. It's about craving chaos and calling it comfort. And this is how it goes. Other boys are boring, and you are a burning house I want to live in. The one from where I don't have a way out, a flickering flame with a silent grin. They bring me flowers that perish soon, but you bring me pain that lasts a lifetime. They complete my words, and you make me feel like a broken rhyme. A steady heartbeat like a song on the radio that plays on repeat at every table, the ones who save a seat. Always seemed like a far-fetched dream until I met you. And being trapped in a nightmare is not bad as it seems. A shelter in the midst of gentle rain, the one that does not feel like an intoxicant but a silver lining. But I am a rebel, so I take my chances and overlook every warning. The thunder never felt so pretty before. I'm ready to embrace the lightning and even the fiery rainfall. I could walk barefoot on shattered glass. This love will be the end of me, but at best, it will last. A flower imprinted in a book long behind in the bookshelf, the kind of love that does not fight or bid farewells. But I love flying high with no safety plan. A bleeding ink that writes so that someone will understand. A maniac to know how it will all burn into ashes. I have always known I would never fit in. The clock that ticks in a slow afternoon, a warm blanket in the month of June, yet like my heart, I like it cold. The time that rushes and blanket that does not fold. I run as fast as I can only to find you at the edge of the place we reside in. Never a home, just a burning house I want to live in. Thank you. That was adorable. Janvi, what do you do? I'm a student. Oh wow, crazy. What are you studying? Finance. Finance. Oh, okay, which year? College? Metibai. Oh, nice. Can we have another round of applause for her? I think it's lovely that you're writing such poems and also coming and performing it, because back in college we were not doing all these things. You kids are smarter. One of the other reasons why not to like them. Because they're much smarter, and their poetry has a lot of metaphors and things like that. Whereas in college, the kind of stuff that I was mostly writing when I started off is just that अंकित से झगड़ा हुआ, कैसा लड़का है यार, वो दिमाग खराब कर रहा है. That's the closest to literature I was, but for anyone who's starting to write, that's a good way to start. Or I think that's called journaling. Now you have tags for all of that. You have the right names for it. But we were just like, we are writers, we write. But anyway, coming back to the story. So she replied back saying, I knew it. For name's sake, I'm not taking that name. Can I get one name? Give me a girl's name. Jia. Okay. Jia. So this friend of mine who was introducing to other friends, let's call her Jia. And the girl whom I had messaged, let's call her Nivedita.
So that one replied back saying, I knew it. Jia had told me that you would text me just like that in these words. And I, being this person, enthusiastic, restless, I was like, reply to turant hi karna hai. So I was like, great. Okay, great. So you know it. So let's meet. And then to which she replied saying that you like me. Why should I meet you? And I was like, oh, she's playing hard to get and all. Because 8th standard में दिमाग इससे फास्ट दौड़ता नहीं है. So then I replied to her saying, मिलेंगे नहीं तो प्यार कैसे होगा? Now you see the shift. आदमी इंग्लिश कितना भी बोल ले, प्यार हिंदी में ही बोल रहा है वो. It's just like that. To which she replied saying, "Is it?" Now I didn't know how to reply for "is it," so I had to really have some game over there or say something that moves her a bit. So then I reply back in style saying, "Meet me thrice. If you don't feel like meeting me for the 4th time, I promise I will never bother you." बहुत ज़्यादा स्वैग, 3 बार क्या करने वाला मेरे को कोई आइडिया नहीं. And it's not that back in that age I was a singer or a musician or an artist or anything. I had no talent, absolutely no talent, except extreme amount of confidence. But then, as fate had it, she agreed to meet me. And we met the first time, which I will tell you about after our next performer comes in. So can we have a nice round of applause for Prakash? Yeah? I guess अभी ठीक है सर. I'm audible? Yes. एक्चुअली मैं कर्नाटका से हूँ और यहाँ पे लास्ट ईयर ही शिफ्ट हुआ हूँ. लिखने के काफ़ी तरीके होते हैं और मैं जनरली गज़ल वगैरह लिखता हूँ, कविता वगैरह लिखने की कोशिश करता हूँ. कुछ आता तो है नहीं, लेकिन आज क्योंकि सिर्फ 4 मिनट है हमारे पास, तो शायद ही मैं अनेक प्रकार के सुना पाऊँगा. लेकिन लड़कों पे मैंने एक लिखने की कोशिश की है. 90% ऑफ द शायद 90% लड़के ये फील कर पाए, शायद 10% ना कर पाए, शायद 10% वो यहाँ भी हो, लेकिन 90% ज़रूर फील कर पाएंगे. कुछ शेर अर्ज़ करता हूँ आपके सामने कि जेब खाली हो तो कोई सलाम नहीं करता. सुनिएगा. जेब खाली हो तो कोई सलाम नहीं करता, सच भी कहो तो कोई कबूल नहीं करता. सच भी कहो तो कोई कबूल नहीं करता. मोहब्बत भी यहाँ गिरवी है रुपयों के पास. सुनिए, गौर फरमाइएगा. मोहब्बत भी यहाँ गिरवी है रुपयों के पास, दिल अगर सच्चा भी हो तो कोई यकीन नहीं करता. दिल अगर सच्चा भी हो तो कोई यकीन नहीं करता. साधारण हो तो किस्मत भी आके फेर लेती है. साधारण हो तो किस्मत भी आके फेर लेती है. हसीन सपनों को तेरा नाम कोई दर्ज नहीं करता. हसीन सपनों में तेरा नाम कोई दर्ज नहीं करता. और शेर ये है कि जो बाप है बेटी का, ये अक्सर होता है, जो बाप है बेटी का वो पूछता है नौकरी क्या है. जो बाप है बेटी का वो पूछता है नौकरी क्या है. तेरे दिल के जज्बात से कोई रिश्ता नहीं करता. तेरे, ये अच्छा शेर था. तेरे मैं तेरे दिल के जज्बात से कोई रिश्ता नहीं करता. गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, सूट बूट नहीं. गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, सूट बूट नहीं, तो इश्क भी तुझे देखने से इनकार करता. तो इश्क भी तुझे देखने से इनकार करता. जो कमाया तो सब वाहवाही करते हैं. जो कमाया तो सब वाहवाही करते हैं. जो गिरे तो यही जहाँ ताने मारता. जो गिरे तो यही जहाँ ताने मारता. अगला शेर ये है कि
हर रिश्ते की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर रख दी जाती। हमें भी पूछ लो। हर रिश्ते की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर रख दी जाती, पूछने वाला कोई नहीं कि तू भी जीना चाहता। पूछने वाला कोई भी नहीं कि तू भी जीना चाहता। तू हंसे तो सब कहते हैं मर्द को दर्द कैसा। तू हंसे तो सब कहते हैं मर्द को दर्द कैसा, पर जो तू रो दे, सुनिएगा, पर जो तू रो दे तेरे आंसू भी मजाक बन जाता। अगर तू रो दे तो तेरे आंसू भी मजाक बन जाता। आखिरी शेर ये है कि लड़की को मोहब्बत मिल ही जाती है कभी न कभी। ये हम समझ सकते हैं, लड़की को मोहब्बत मिल ही जाती है कभी न कभी, पर लड़का अगर टूटा तो बस अकेला रह जाता। अगर लड़का टूटा तो फिर अकेला रह जाता। मेरे ख्याल से समय ख़त्म हो चुका है, फिर कभी कुछ और सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बस प्रकाश का कॉन्फिडेंस चाहिए, बाकी सब एक तरफ। एंड यहाँ पे कितने हिंदी में परफॉर्म कर रहे हैं, हिंदी उर्दू? हो क्रेजी। नो, बिकॉज ये एक चीज़ जो है मैंने सबसे ज़्यादा हिंदी आर्टिस्ट में देखा, और जो बहुत बढ़िया बात है, अगर कोई शेर अच्छा होता है और लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो सामने से बोल देते हैं शेर अच्छा था, ताली बजाइए। इंग्लिश आर्टिस्ट डोंट हैव दिस कॉन्फिडेंस, दे आर जस्ट लाइक मे बी अच्छा था, ऐसे करके हम लोग करते हैं, बट बहुत बात चीज़ थी। एंड द अदर थिंग इज़, वो जो लास्ट वाला बोला ना, लड़की को प्यार मिल ही जाता है। सो फन फैक्ट, नॉट फन फैक्ट एक्चुअली, men mostly know this. A woman's dating app section is a shopping mall. This is the funniest thing, dude. And I kid you not. So, I'll take 2 minutes. Fun fact is that so when men talk about dating apps, they're just like, यार मैच नहीं होता, मैच हुआ तो फिर बात नहीं होता, बात हुआ तो फिर दो टाइम्स ज़्यादा रिप्लाई नहीं होता, blah 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 blah. And every time I've spoken to these female friends of mine, and they're like, yaar, dating app, the problem with this guy is he wants to talk too much. I'm like, okay. The problem with that guy is he's not too attentive. I'm like, okay. The problem with the other guy is उसका कुछ तो मतलब he seems cryptic. I'm like, तुम लोग को इतने options मिल किधर रहे हैं? Have you ever seen men? Like dating ऐप पे एक मैच आ गया तो ऐसा लगता है फक दिवाली की छुट्टी हो गई, इससे ज़्यादा क्रेजी कुछ है ही नहीं। फिर बाद में डिसअपॉइंटमेंट ये है कि उसका कभी रिप्लाई नहीं आता, बिकॉज वी नेवर रियलाइज दैट शी हैज़ 10 people मैच्ड in a good way. I don't mean anything bad here. It's just that. But can we have a nice round of applause for Prakash, guys? बहुत सही पढ़ा यार, तुम करो ये प्लीज, अच्छा लिखते हो, मस्त। Okay, so we were at our first date. Now, the plan for the first date was that we were going to meet outside her college. And back then I was in school, she was in college. So we were going to meet there, and we were meeting for a walk because nothing fancy. No one has money over there. She might have some money for pocket money. I was going to school. There's no reason for me to have money. So then we met over there. We met for about 2 hours. All 2 hours I was consistently talking. Towards the end of 2 hours, she was just like, I love how much you love yourself. And I was like, oh, me too. Because I don't know if it's a good thing or not. But theek hai, that happened. We spent a very good time. I think so. Because she agreed to meet for the second time. Now this second time meant maybe she's interested. Because honestly जब मैंने डायलॉग मारा मैं सोचा पहली बार मिलेगी फिर बोलेगी मैं नहीं मिल रही, इससे ज़्यादा नहीं होगा. But then the second time happened. But let's call our next performer. We'll do that. Yeah? Can we have a nice round of applause for Isha? Keep clapping, keep clapping, keep clapping.
पीछे. Yeah. Thank you so much for this opportunity and very beautiful storytelling. I'm really like into this, and I actually edited my lineup for the story that he's narrating because all love stories, जितनी भी love stories होती है, उनकी सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? I actually wrote a two-liner on that. प्यार का इजहार किसी भी प्रेम कहानी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है. प्यार का इजहार किसी भी प्रेम कहानी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है क्योंकि इसमें एक तरफ पाने की आस होती है और दूसरी तरफ खोने का डर. So this just I thought I should say this. So my name is Isha Patwari. I do Hindi poetry. I've been writing poetry for a couple of years now. तो आई थिंक मेरा फेवरेट जॉनरा है. मेरी मॉम एमपी से है और वो बहुत कहावतें बोलती रहती है और मुझे उनकी कहावतों को चैलेंज करना बड़ा मज़ा आता है. सो वो मुझे बहुत बार बोलती रहती थी कि यू शुड बी ग्राउंडेड, झुके रहना चाहिए, ऐसा वैसा. तो मैंने उस पर 2 लाइन लिखी थी कि कहते हैं कि झुके हुए पेड़ पर ही फल लगते हैं. कहते हैं कि झुके हुए पेड़ पर ही फल लगते हैं. मैं अक्सर सोचती हूँ कि फल इसीलिए लगते हैं क्योंकि पेड़ झुका हुआ है या फलों का भार पेड़ को झुका देता है. माना कि फलों में रस है, रंग है, मिठास है, पर आसमान भी तो उन्हीं को मिलते हैं जो इन फलों को पीछे छोड़ने की हिम्मत रखते हैं. इससे पीछे छोड़ने से याद आता है कि बड़ा होना क्या होता है. इट्स गेटिंग ओल्डर इज़ अ बिग मोमेंट एंड इट जस्ट हिट्स यू डोंट रियलाइज. इट्स जस्ट बिन अ ईयर आई गॉट मैरिड एंड आई थिंक थोड़ा बहुत बड़ा होना अब मुझे रियलाइज़ होने लगा है. तो एक छोटी सी पोएम लिखी थी जिसका नाम था टुकड़े. हियर इट गोज़. एक बेटी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, बड़ा होना क्या होता है? माँ ने कहा, पूरा इंसान होने पर भी हिस्सों में बंट जाना बड़ा होना होता है. अपनी कुर्ती पर पैबंद लगाकर किसी और के लिए 2 जोड़ी फिजूल कपड़े खुशी खुशी खरीदना होता है. अपने ही घर से अपने घर के लिए निकलना बड़ा होना होता है. जिस उंगली का सहारा लिया उसी का सहारा बनना होता है. आज़ादी होने पर भी बंधन में जीवन जीना ये बड़ा होना होता है. माँ ने कहा, तू क्यों पूछती है? तजुर्बा माँ हूँ इसीलिए ज़्यादा होता है. जो बचपन वरदान है तेरा, क्योंकि बड़ा होना इतना भी खास नहीं होता है. Since I just have a minute, मैं कुछ छोटे छोटे ख्याल जो लिखे हैं वो I'll just run it by you all. हमारी इंडियन पेरेंटिंग मिलेनियल्स में यूजुअली वही होता है कि पत्थर को तराशो तो उससे हीरा बनता है, तो प्रेशर डालो एंड ऑल ऑफ दैट. पर एज वी नो मोर अबाउट मेंटल हेल्थ, हमें पता चलता है कि सब एक जैसे नहीं होते और सबको तराशा नहीं जा सकता. एंड दैट्स वेयर दिस थॉट केम टू मी दैट उसे पत्थर समझकर वो तराशता रहा. उसे पत्थर समझकर वो तराशता रहा, पर वो जो मिट्टी का बना था वो बस यूं ही बिगड़ता चला गया. थैंक यू सो मच. एंड वन लास्ट थॉट, क्योंकि हमारी आदत होती है सोशल मीडिया और हमारे दोस्त, हमारी फैमिली, हम हर किसी को दूसरे के नज़र से देखते हैं. एंड आई थिंक आई वॉज वन ऑफ देम. तो मैंने एक ख्याल उस पर लिखा था कि घर से निकलो तो शीशे निकाल आना. घर से निकलो तो शीशे निकाल आना, क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है इनका. उन्हीं से पूछ लेना कैसे लग रहे हो, नज़रिया इस्तेमाल करने लगे हो जिनका. थैंक यू सो मच. What a lovely performance. Can we hear it again for her? I think the best thing about millennials still is we're still suckers for love stories.
rom-coms and love stories. You know, one of the pieces I was writing in between, and this is one thought that has been eating me since, I don't know, for the last couple of years, that nor Bollywood, neither Hollywood is making the kind of rom-coms they made between 2000 to 2010. Those were crazily good rom-coms. They were stupid. They didn't make too much sense, but what they spoke about made a lot of sense, and it had something to do with a good moral as well. And now we don't find that anymore. So I'm just sharing this collective sadness. Because yeah, man, there's nothing better than love stories, and I think it's also one of the reasons I started writing love failure. That's where it all started from. No, actually I started writing to impress the girl I was with. And this girl was like, you write well. And I'm like, no, you're in love with me. Let's relax. Anyway, coming to date number 2. On date number 2, I was a listener, guys. In 2 hours, I just spoke for 90 minutes. Rest was all hurt. But I also got to know she liked flowers. Yellow was her favorite color. She loved reading. Ruskin Bond was one of her favorite writers. And she started opening up to me a little. Or probably I started giving her some time to open up. That's when she would talk to me. Which meant there was a third date going to happen. Now, if things are going great, either by the forces of God, it has to be screwed up by someone, or I should do it myself. Because overconfidence. So I told her, if you feel like meeting me after the third date, you will give me a Cadbury. Now, don't judge, but do you know what Cadbury meant during my school days? Or yours? Any guesses? Huh? You're a nice person, buddy. No. Anyone proposing? No. The tagline says kiss me, I think. Cadbury. Cadbury meant a peck on the cheek, which is way too much to ask for. Back in 8th grade, if a girl kisses you on your cheek, मतलब इस life में और कुछ चाहिए नहीं. And as boys, you don't wish for too much in life. So then I messaged her this, and she was like, she replied saying, yeah, we will see. Which meant she didn't say no. Because for some reason, men are stupidly wired. When they don't get a no straight, they think that there is still yes. Anyway, we will come to the third date after the next performer. Are we ready for the next performer? Yes. Are we having a good time? Yes. Awesome. So can we have a nice round of applause for Pranav? Keep clapping, keep clapping. हेलो रिप्लाई कर सकते हैं हेलो हेलो डेट वेट की बात कर रहे थे मैं अपने बताता हूँ कि मेरा नाम प्रणव है मैं पेशे से किस्से कविता और कहानियाँ सुनाता हूँ और बाकी टाइम में स्कूल जाता हूँ हाँ सही स्कूल में जाता हूँ मैं आप लोगों से बहुत छोटा हूँ और अभी रिसेंटली स्कूल में मेरा ब्रेकअप हुआ पर आपको फिर भी वो पहली मुलाकात याद है अपने अपने प्यार की ना बचपन वाली की वो इश्क बड़ा एकदम मासूम रहता है आपको पता नहीं क्या होगा तो ना आप वो फ़ोन पे बात करने लग जाते कि अच्छा मिलके ये होगा वो होगा पर रियलिटी है कि आप उससे नज़रें भी नहीं मिला पाओगे दोस्तों तब एक मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ आप कहेंगे इरशाद कि एक ही वादा ताउम्र निभा पाओगी एक ही वादा ताउम्र निभा पाओगी क्या पहली ही मुलाकात में नज़रें मिला पाओगी एक ही वादा ताउम्र निभा पाओगी क्या पहली ही मुलाकात में नज़रें मिला पाओगी क्या तुम काली गहरी सियाह रातों से डरती हो मुझे उन रातों का चांद बना पाओगी फिर ना ब्रेकअप हो गया मेरा पर ना ब्रेकअप मेरा ना वैसे टाइम पे हुआ था कि ना उस टाइम ना वो इंस्टा नोट आपको पता है जो इंस्टा में हम गाने लगाते हैं नोट्स पे तो ना वो नया नया आया था तो ना जिस दिन मेरा ब्रेकअप हुआ ना उससे अगले दिन उसने उस पर गाना लगा दिया एकदम अरिजीत सिंह का कि मेरी आशिकी अब तुम ही हो किसी और के लिए तो मैं कंफ्यूज कि कल तक तो मैं था ना आशिकी तो फिर
तब मैं एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। रजत सूद एक शायर बहुत अच्छी पोइट्री करते हैं, वो पोइट्री कॉमेडी करते हैं। उनका शेर है कि तुम लफ्ज़ों से खेल कर अब आबाद किसे करते हो, कि तुम लफ्ज़ों से खेल कर अब आबाद किसे करते हो यार, वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बात किसे करते हो यार, और एक सवाल हरदम हर पल मेरा दिल पर दस्तक दे जाता है, तुम अरिजीत को सुनते हो तो याद किसे करते हो। और ना बहुत हमारा बहुत ना सीरियस रिलेशनशिप था पूरे स्कूल में, पूरे 6.5 दिन का। हम जेनजी में इतना ही चल पा रहे। तब मैंने उसके लिए कविता लिखी थी कि मेरी ज़िंदगी में एक नायाब लड़की थी। ठीक है ठीक है ठीक है, लेट इट बी। दोस्तों इरशाद, मेरी ज़िंदगी में एक नायाब लड़की थी, मेरी ज़िंदगी में एक नायाब लड़की थी, मेरे उजले से घर की सवरी सी खिड़की थी, वो लड़की जो ख्वाब दिखाती थी, वो खिड़की जो, ठीक है स्कूल में हूँ, ठीक है हम कर सकते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में एक नायाब लड़की थी वो, ठीक है दूसरी कर सकते हैं, ठीक है कोई बात, हाँ फ़ोन से देखेंगे, हाँ ठीक है। हाँ ऐसे अक्सर ऐसे लोग ना वो बोल के चले जाते हैं कि यू डिज़र्व बेटर, इट्स नॉट यू इट्स मी, है ना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट में। हमारे एजेंसी में ये बोलते हैं, लेकिन आपके टाइम में वो वाले ब्रेकअप होते हैं ना कि बाबू अब्बा नहीं मानेंगे। तो एक मेरा हमारी कास्ट सेम नहीं है, 1.5 साल से कोई रियलाइज़ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही सीरियस हो गया वैसे ही तो हम अब्बा नहीं माने। तो ना मेरा एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है कि ना किसी के देखो अब्बा नहीं सिखाते कि ये इस धर्म का है, ये इस जात का है, इस बात का है, तो उससे बात मत करो, है ना, उससे रिश्ता मत बनाओ। हम बस इस समाज ने ऐसी धारणाएं फैला ली है। तो ना इस बात पे ना मुझे बहुत अच्छे पापा मिले कि उन्होंने मुझे ना ऐसा वो मज़हब का बैर नहीं सिखाते मुझे। तब दोस्तों मैंने एक शेर कहा है कि वो मेरी सारी दुख परेशानी अपने सर पर रखते हैं, वाह कर सकते हैं। वो मेरी सारी दुख परेशानी अपने सर पर रखते हैं, जालिम ज़माने से महफूज मुझको घर पर रखते हैं, और सिखलाया नहीं बापू ने कभी किसी मज़हब से बैर करना, वो मेरा मत्था खुदा और भगवा दोनों दर पर रखते हैं। और ना तब मैंने ऐसे पोइट्री भी लिखी थी कि ना पापा आपको मतलब आपके माँ बाप आपको बचपन से क्या क्या सिखाते, सब कुछ सिखाते, लेकिन उनके बगैर जीना नहीं सिखा। तब मैंने कविता लिखी कि बापू ने सिखलाया मुझको कैसे इस जालिम दुनिया में जीना, बापू ने दिखलाया मुझको ज़माना है एक नगीना, कहा था उन्होंने बेटा तुम सच्चे रहना, हरदम अंदर से अच्छे बच्चे रहना, ये लोग बहलाए फुसलाए लाख मगर तू किसी की बातों में आना मत, कभी कोई गलत रास्ते पर जाना मत, और कभी ज़रूरत हो किसी को तो सबसे पहले अपना हाथ देना, मज़हब के उसमें खुद को कभी मत बांट। थैंक यू सो मच। Bro, which standard? Which standard? जूनियर कॉलेज। स्कूल ऐसे थोड़ा टेंशन आ गया मेरे को। फर्स्टली बहुत बढ़िया पढ़ा, कैन वी हैव अ नाइस राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। व्हेन ही वेंट टू पहली मुलाकात इट वाज ग्रेट, बट देन ही वाज लाइक, फिर वो टाइम पे इंस्टाग्राम को आया, कुडंट रिलेट ओनली। बैक इन स्कूल हम ज़्यादा से ज़्यादा मिस कॉल देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा। I think Abba Nahi Manenge was slightly before us, not exactly us, because we didn't think so far. We were just like, let's see. But yeah, so we were the landline पे miss call generation, जिसको Instagram छोड़ो Orkut में मैसेज कर दिया तो बहुत बड़ी बात थी. Anyone remembers Orkut? Nice, nice. I think life was great when Orkut was there. Then Facebook kind of screwed it up. There's no point of Facebook coming into picture, and now Facebook lies like that piece of cloth that no one's looking at, but everyone's receiving a notification from it every now and then. Someone's birthday or someone got married. And the fascination for millennials though is just going to Facebook and changing status from single to committed. Because when we were in college वो आया था तभी किसी के जी में दम नहीं था कि वहाँ पे जाके committed लिख सके. Because most of the time the girl is like, no, I can't do it, my parents, my family is there, and the guy is like, I'm not going to do it because I don't know if this is going to continue. Anyway, lovely यार. कौन से कॉलेज में हो आप? Oh, right. It's just a Mumbai concept, school, junior college है, +2, I get it. Nice. फिर अभी ब्रेकअप हुआ है, कैसे चल रहा है? ठीक. मुंबई में किससे मिले?
मुंबई में किससे मिले? हाँ, गुड 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 चॉइस, बिकॉज इधर से दिल तोड़ के वापस ही भेजेंगे तुमको. ऐसे नहीं होगा कि तुम इंदौर से हो, इनोसेंट हो, तुम्हें एडवाइस दे, सब नहीं होगा. बट इट्स अ ग्रेट थिंग कि यू आर लीनिंग ऑन टू आर्ट. वी मेजरली केम फ्रॉम फ्रेंड्स टेलिंग अस दूसरी लड़की पटा लो. एंड स्कूल में तो कर भी लेते थे, बिकॉज कितने दिन, तुम्हारा पहला प्यार 6.5 दिन का था, मेरा 12.5 दिन का था, या फुल 12.5 दिन, क्योंकि मेरे लिए तो फिक्स था कि प्यार हो गया. बट द गर्ल वॉज लाइक ऑन द 13th day, शी वॉज लाइक, आई डोंट लव यू एनी मोर. आई एम लाइक, हाउ कुड शी से दैट? प्यार एक बार होता है. व्हाट इज दिस? But anyway, coming down to the third meeting. So, third time we were to meet, but this time it had to be a better location. It couldn't be the same time meeting on the walking across the footpath outside her college. So, बॉम्बे का एक लास्ट स्टेशन है मुलुंड करके, थाने के जस्ट पहले आता है. मेरा बचपन वहीं गुजरा है. तो मुलुंड का उस टाइम पे सबसे वर्ल्ड फेमस एक प्रभुज आइसक्रीम पार्लर करके था. वी डिसाइडेड टू मीट देयर. दिस वाज अ डेट, नॉट लाइक लेट्स जस्ट मीट. सो वी मेट देयर इन द इवनिंग एंड शी ऑर्डर्ड फॉर सम milkshake and I ordered for this coolish thing called slush, ice slush. बेसिकली बर्फ़ का चूरा करके तुमको उसमें जूस डाल के दे दे, दैट वाज स्लश, बट साउंडेड कूल बिकॉज स्लश. सो देन वी सैट अक्रॉस ईच अदर एंड दैट डे आई डिडंट स्पीक अ वर्ड. आई वॉज जस्ट क्वाइटली ऑब्जर्विंग हर. एंड देन आउट ऑफ नोवेयर शी ब्रोक हर साइलेंस सेइंग दैट, आज क्या हुआ? आज तुम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो. एंड देन आई जस्ट चेंज टोन टू सेइंग दैट टुडे इज़ नॉट फॉर मी टू टॉक. टुडे इज़ फॉर मी टू devour दिस मोमेंट, टू लुक एट यू एंड स्टे इन योर कंपनी. आई स्वेयर एवरीथिंग वॉज इन इंग्लिश. माई इंग्लिश वॉज गुड. To look at you and to sit in your company. Maybe after today, you might never meet me again. You might choose to move on, meet some other guy. But I have to tell you, that boy would be really lucky to get time with you and to have the chance to spend whatever time he gets with you. And she was slightly taken aback. Because all she saw in the first 2 times we met was a boy who just kept blabbering and talking about everything materialistic on earth. And this time, he really confessed what he liked about her. So I continued with my monologue, saying that you probably have the cutest dimple that I've ever seen, and your eyes are the most beautiful. They are expressive in unspoken ways, and probably your silence makes me feel warmer with you. So maybe today I will really not talk too much. I will just hope that we meet for the next time. And if not, then this is probably the best time I have with you. Chup. Full chup. मैं उधर अंदर से एंग्जाइटी नर्वसनेस के साथ बैठ के मेरा स्ट्रॉ चबा रहा हूँ, और वो शांति से उसका बचा हुआ मिल्क शेक पी रही है. दोनों को पता नहीं हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, बिकॉज बॉलीवुड डिडंट टीच दैट. Bollywood taught everything except dealing with silences between two people that are in love or that even like each other. Or probably men doing stupid stuff. So then we were quiet. And then our drinks and all got over. And it was time to leave finally. With that, I will call the next performer for us. Can we have a nice round of applause for Sagna? Keep clapping, keep clapping.
हेलो, माय नेम इज़ साधना और जस्ट कॉलेज ख़त्म हुआ है, मास्टर्स। और ऐसे तो मैं न्यूज़ प्रेजेंटर हूँ और एडवर्टाइजिंग भी कर लेती हूँ लोगों के लिए। और सिंस 5 इयर्स आई एम राइटिंग पोइट्रीज़ और ख्याल, और अक्सर मैं ख्यालों में ही खोई रहती हूँ। मुझे रियलिटी से ज़्यादा ना जो ख्याल होते हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं मेरी लाइफ में। तो एक ख्याल से शुरुआत करती हूँ कि एक सवेरा लाखों अंधेरा हर लेता है, एक सवेरा लाखों अंधेरा हर लेता है, एक बेचारा क्या कुछ नहीं कर लेता है। सुबह में जाता दफ्तर को, रात मौज में काट देता है। दिस इज़ फॉर बॉयज़ एग्जैक्टली। तो सुबह में जाता दफ्तर को, रात मौज में काट देता है। घर वाले कहते बेटा हमारा जिम्मेदारी से खुद को बांट लेता है, और हर दिन कल कल कहकर कल पर टाल देता है। आज जवानी को जीना चाहता है, आज जवानी को जीना चाहता है, और बंद मुट्ठी में गिनती भर नोट देखकर कभी मन भी मार लेता है। महबूबा को डेट पर ले जाना है, महबूबा को डेट पर ले जाना है, लेकिन घर पर माँ की दवा भी पहुँचाना है। फिर सोचता है कि ईएमआई की किश्त भी तो चुकाना है। एक मिनट। महबूबा को डेट पर ले जाना है, लेकिन घर पर माँ की दवा भी पहुँचाना है। फिर सोचता है कि ईएमआई की किश्त भी तो चुकाना है। भाई खुद के लिए कितने पैसे बचाना है, और जेब की कंगाली देखकर कुछ पैसे तो बचाता है, लेकिन बहन की शादी पर फिर नोट जम कर उड़ाता है। और भूल जाता है क्या, भूल जाता है क्या, खुद के लिए भी कुछ बचाना है। माँ और बीवी के बीच में अब बैलेंस भी बनाना है। फिनेंस के साथ साथ अब घर के झगड़ों को भी सुलझाना है। और लड़के से जब मर्द बने तो कितनी आफत से खुद को बचाना है। जिम्मेदारी के बोझ से कभी ऊपर भी तो आना है। ऐसे ही ना एक सवेरा लाखों अंधेरा हर लेता है। देखो ना एक बेचारा क्या कुछ नहीं कर लेता है। और थैंक यू। और मैं अक्सर मोहब्बत पर लिखती हूँ, अक्सर मैं मोहब्बत पर लिखती हूँ, और मुझे उसके सिवा कुछ नहीं दिखता। बट इस बार मोहब्बत से नाराज़गी है। तो उसमें है कि मोहब्बत में महबूब को ख्याल नहीं आता। कितना भी टाइम मांगो लेकिन महाराज के पास कभी टाइम नहीं होता है। पता नहीं ये क्या करते हैं, मेंस बट बिजी बहुत रहते हैं, और लड़कियां हमेशा इंतज़ार करती हैं एक टेक्स्ट करने के बाद घंटों तक कि अब रिप्लाई आ जाए, बट नहीं आता। तो उस पर है कि मोहब्बत में महबूब को ख्याल नहीं आता। क्या उसके मन में एक सवाल नहीं आता, जिसके बिना मेरा दिन नहीं गुजरता, क्या उसे भी रातों में करार नहीं आता। और उस बेदर्दी को मुझ पे प्यार नहीं आता, कैसे उसको इस बात का मलाल नहीं आता। मेरे आंसू देखे नहीं जाते उससे, मेरे आंसू देखे नहीं जाते उससे, लेकिन देख आंसू माथे पर उसके शिकन नहीं आता। है दूर इतने हम कि कभी वो मुझसे मिलने नहीं आता। हर रात आती हैं यादें उसकी मिलने मुझसे, हर रात आती हैं यादें उसकी मिलने मुझसे। रात तन्हा अकेले वो भी गुजार नहीं पाता। और ये जो करती हूँ मैं शिकायत उससे, ये जो करती हूँ मैं शिकायत उससे, मेरी शिकायतों का भार वो थाम नहीं पाता। और अब बस एक तमन्ना है कि हम करीब हों, मोहब्बत में दिन तन्हा अकेले वो भी गुजार नहीं पाता। और एक लास्ट है कि क्यों इतना फ़र्क है, क्यों इतना फ़र्क है दिन और रात में, जैसे जमी और आसमां में, जैसे मझधार और किनारे में, जीवन के हर पहलू के नज़ारे में, जैसे माँ बाप के बुढ़ापे में और बच्चे की जवानी में, मोहब्बत की रवानी में, हंसने और रोने में, किसी का हो के उससे जुदा होने में। क्यों इतना फ़र्क है किसी का हो के उसके ना होने में। थैंक यू। That's such a sweet performance. Felt so much life on stage. Great. Can we have another round of applause for that? A small disclaimer, guys. Please keep a note of the time. One, that you don't go overboard. And two, during a performance, please don't get up or displace from wherever you are, because camera में record हो रही है चीज़ें. तो किसी का वीडियो अगर
it could distort someone's video or something like that. But yeah, great. Awesome performance, and I like this whole vibe of mohabbat, mohabbat, mohabbat. It's just a lot of love. Feels great. So, oh yeah. So we were getting out of this ice cream parlor, and both are silent at this time. There's nothing being spoken or there's nothing being said, and I'm standing like a person who's bet on a horse or a jockey or something and is waiting for the result. I'm just quiet. And she doesn't utter a word or anything, and we start looking. We go closer to the rickshaw stand because you can just say like यहाँ पे आइसक्रीम पार्लर है, इसके एग्जैक्ट रोड के ऑपोजिट साइड पे रिक्शा स्टैंड है जहाँ से रिक्शा पकड़ के घर जाते हैं. So she didn't say a word. I also didn't say anything, and then we reached the rickshaw stand, and she was like, so. I was like, so, because I didn't know what to say. And then she was like, okay, so I'll leave. And I said, okay, fine. ऐसे करके we were looking for rickshaws, and we were not getting any rickshaws over there. So at that point in time, I'm frantically looking out for a rickshaw for her to get in and leave. And she's standing kind of behind me because I'm looking out for the rickshaws. So सामने वहाँ पे एक रिक्शा वाला है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, भैया इधर इधर छोड़ना है, जाओगे क्या, ये वो नहीं. एंड ही सेइंग नहीं 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 मैं नहीं जाऊँगा, ऐसे वैसे ऐसे वैसे करके. एंड देन विद इन द नेक्स्ट मोमेंट आई टर्न अराउंड, and then she's almost got a rickshaw, but that guy doesn't come. But then she's like, anyway, I'll see you, I'll leave karke. She hugs me. This has not happened so far. She hugs me. And by the time I could realize of the hug, we are parting from the hug. She gives me a Cadbury, she sits in the next rickshaw and she leaves. You remember Cadbury? And yeah, so then we dated for like 6 months because kids, it doesn't happen more than that. But this was my small story, and we have come to the end of this story, not to the evening. A nice round of applause would be great. Right, so at the beginning of the event, with all the excitement to be on stage, I forgot to introduce myself. My name is Krishna Iyer, and during the day I'm a corporate slave, and whenever else I get time, I'm a storyteller, writer, and I enjoy telling stories. It's just a lot of fun. It's probably by virtue of the way I've grown up with people around me. And like I said, I've lived too many stories, and बहुत बकचोदी की बचपन में. So there are a lot of stories to just share. Awesome. Can we call the next person? Can we start clapping? Start clapping. Saz. Can we have Saz on stage? हेलो दोस्तों. मैं भी इंदौर से हूँ और मैं स्कूल में नहीं हूँ, और मैं पिछले 2 साल से परफॉर्म कर रहा हूँ, और लिखना मैंने 5 साल पहले शुरू किया है जब मेरा पहला ब्रेकअप हुआ था. तो उस टाइम ऐसा था कि यार हम दोनों की एक ख्वाहिश थी साथ में बारिश में भीगने की, पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, 1.5 साल चला था. उसमें एक बार बारिश आई थी और उसमें हम साथ में भीग नहीं पाए. तो जब ब्रेकअप हुआ उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया, तो सबसे पहली कविता मैंने लिखी थी, वो सुनाता हूँ मैं, ठीक है? एक बारिश तुझ संग भीगने की, एक ख्वाहिश मेरी बाकी है, तुम वक्त निकाल कर आना कभी, मैं बारिश लेकर आऊँगा. बहुत शुक्रिया. तो जब हम मिले थे ना पहली बार, तब ऐसा हुआ था कि मैंने उसको प्रपोज़ किया था, उसने 2 महीने रुकवाया मुझे, और जब उसने जवाब दिया तो उसने एक लिप किस करके दिया कि यही है जवाब. तो अगली लाइनें उन्हीं पे है कि तुम आना पहली बार सी ही, स्याह सर्द रातों में, कर देना अपने लब आगे, यूं ही बातों बातों में. तुम आना पहली बार सी ही, स्याह सर्द रातों में, कर देना अपने लब आगे, यूं ही बातों बातों में. मैं फिर से तेरे लबों से, मैं फिर से तेरे लबों से सुर्ख शबनमें चुराऊंगा. तुम वक्त निकाल कर आना कभी, मैं बारिश लेकर आऊँगा. बहुत शुक्रिया. तो जब हम मिले थे ना पहली बार, तब ऐसा हुआ था कि मैंने उसको प्रपोज़ किया था, उसने 2 महीने रुकवाया मुझे, और जब उसने जवाब दिया तो उसने एक लिप किस करके दिया कि यही है जवाब. तो अगली लाइनें उन्हीं पे है कि
थैंक यू सो मच. अभी ना कुछ शेर सुनाऊंगा मैं, कुछ शेर, कुछ ख्याल, जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम है नहीं, ठीक है. अर्ज किया है, अगर ना अलग होते रास्ते हमारे, अगर ना अलग होते रास्ते हमारे, तेरी डांट से उठते बच्चे हमारे. बहुत शुक्रिया. अगर, बहुत शुक्रिया, थोड़ा लेट समझ आ रहा है. अगर ना अलग होते रास्ते हमारे, तेरी डांट से उठते बच्चे हमारे, तेरे होने से रहती रौनक सी घर में, तेरे होने से रहती रौनक सी घर में, तेरे हाथों से सजते कमरे हमारे. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. अब हम किसी के लिए लिखते हैं तो क्या हालत हो जाती है वो सुनाता हूँ मैं. कि लग गई थी मेरी आँख तुम पर लिखते लिखते, रुके नहीं मगर हाथ तुम पर लिखते लिखते. ऐसे रिपीट करोगे ना साथ में तो और अच्छा लगेगा. लग गई थी मेरी आँख तुम पर लिखते लिखते, रुके नहीं मगर हाथ तुम पर लिखते लिखते. मुस्कुरा रहा था नींद में शायद, मुस्कुरा रहा था नींद में शायद, देख रहा था तुम्हारे ख्वाब तुम पर लिखते लिखते. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. फिर आप ऐसे किसी अच्छे रिलेशनशिप से निकल के मूव ऑन करने का ट्राई करते हो ना, तो किसी खराब रिलेशनशिप में चले जाते हो. तो एक कहावत है, नादान की दोस्ती जी का जंजाल. उसी पर से कुछ आया है कि जी का जंजाल कर बैठा, एक नादान से प्यार कर बैठा. जी का जंजाल कर बैठा, एक नादान से प्यार कर बैठा, पुराने जख्मों के मरहम तलाशने में, पुराने जख्मों के मरहम तलाशने में, जख्म नया तैयार कर बैठा. ठीक है. और अभी मैं ना ऐसे 2 साल से कर रहा हूँ परफॉर्म और कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे कुछ बढ़ नहीं रहा है आगे. तो क्या सिचुएशन है वो सुना रहा हूँ. आखिरी एक मतलब और एक शेर है. टूट जाए ना कहीं सब्र मेरा, आजमा रहा है अब हुनर मेरा. टूट जाए ना कहीं सब्र मेरा, आजमा रहा है अब हुनर मेरा. मेरा बारिशों से डरना बनता है, मेरा बारिशों से डरना बनता है, कच्ची नींव पर बना है घर मेरा. बहुत शुक्रिया. और एक आखिरी शेर, कच्ची नींव पर बना है घर मेरा, और ये सारे मेरे दोस्तों के लिए है. कच्ची नींव पर बना है घर मेरा, मेरे दुख में छलके आंसू तेरे, मेरे दुख में छलके आंसू तेरे, तेरे सजदे में झुकेगा सर मेरा. बहुत शुक्रिया दोस्तों. क्या सही पढ़ा यार. हाँ, बहुत 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 अच्छा था. स्पेशली वो वाला लाइन फिर से सुनाओगे जो हम सबको बहुत लेट पहुंचा. इफ वी डिडंट, हाँ, इफ वी डिडंट पार्ट वेज, देन आवर किड्स वुड वेक अप विद योर शाउटिंग. सॉरी. नहीं, एक बार पढ़ो ना, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ. रिपीट द लाइन. अगर अलग ना होते रास्ते हमारे, तेरी डांट से उठते बच्चे हमारे. बहुत ही प्यारा लाइन है. आई थिंक दिस इज वन थिंग अबाउट लैंग्वेज ऑल्सो. The amount of freedom and rhythm that you have in something like a Hindi or a Marathi or any regional language, English doesn't give you that enjoyment. Like English is a very stiff language. It's a brigadier jaisa English. Although I write, read, think in English, but still I think people who can perform in Hindi or any vernacular language for that matter, any regional language, I don't know if vernacular is also again something offensive because I read an article. Any regional language is great. And rhyming का मज़ा ही कुछ अलग है उसमें. English में rhyming most of the times बहुत forced लगता है. So can we have another round of applause for him though? Awesome. I'll perform a small piece for you, then we call the next person. Does that work? Okay. Since we're talking about millennials and growing up and all of that, I'll perform this piece. There's no title to this piece, so you can suggest a title for the piece, although think over it. And I think I would like to put a petition. जैसे हिंदी में इरशाद है, वैसे इंग्लिश के लिए कोई वर्ड ढूंढना चाहिए हमें. हाँ? Bring with words like bring it on, go on and all. No, it just doesn't have the feel. Irshad sounds so nice.
एंड इरशाद का इंग्लिश के लिए कुछ सोचते हैं. जस्ट आई एम लीविंग यू विद दैट थॉट. सोचो. ओके. As I grow older, I seek more intimacy than novelty. But everything in which I look for it seems to expire. Before I owned a smartphone, the warmth of looking in the eyes and having to talk was an intimate feeling. Before I bore the solitude of wireless headphones, sharing the closeness of wired headphones was an intimate feeling. Before I sought the independence of Google, curiosity paved a path for conversations. The spark in the eyes of the explainer was an intimate feeling. Before I learnt of instant messages, waiting for a missed call on the landline was an intimate feeling. Before Kindle became a thing, a random note in the borrowed book was an intimate feeling. Before we grew into the fascination with sneakers, footsies was an intimate feeling. Before I learnt of variety on Instagram, undivided attention was an intimate feeling. As I grow older, I seek more intimacy than novelty. But everything in which I look for it seems to have expired. Thank you. Do you guys feel this? Like, as much as I need to stay on Instagram, I despise it as an app. It's just the most annoying thing. How many people here enjoy reading from books, physical books? Oh, nice, great. When Kindle and all is great, but just it's not fulfilling. That experience is just not fulfilling with all of that. I think somewhere or the other, one of my fears is just that losing tangibility towards things. I mean, COVID kind of intensified that, because of which everything became virtual. But cool, let's call the next person. Can we have a nice round of applause for Disha? Yeah, keep clapping, keep. Come. I understand. I'm the only one. No, you're not the only one. It's extremely pleasant here. Is this better? Yeah, this is better. I'm like, I mean, I was unable to speak and say anything, but I was trying to do a lot of wah and all. Yeah. Good. फिर हुई एक लव स्टोरी, एक छोटी सी कहानी. ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बस अब हमारा दिल नहीं है. So, अभी हाल ही में मेरा ब्रेकअप हुआ और मैंने ब्रेकअप की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट की, जैसे कमरे में बंद होना, फ़ोन कॉल पे बात नहीं करना, पार्टीज इग्नोर करना, खाना नहीं खाना, एवरीथिंग. जगजीत सिंह, अरिजीत सिंह का प्लेलिस्ट रिपीट मोड पे सुनना. जब आप ऐसे फेज से गुजर रहे होते हो तो आपके आसपास कोई ऐसी प्रजाति होती है जो बहुत ही बेशर्म हो जाती है और बिना जाने मांगे आपकी ज़बरदस्ती मदद करने पहुंच जाती है. आप बोलोगे फ़ोन ना करें तो आपको हर मिनट फ़ोन करेंगे, मैसेज ना करें तो आपको हर सेकंड मैसेज किया जाएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ तक कि लिंक्डइन और गूगल मीट भी भेज दिया जाएगा. वो प्रजाति होती है दोस्तों की. तो मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने आगे बढ़ के मेरी इतनी मदद की बिना मांगे हुए. मैं सो रही थी, सोते में मेरे फिंगरप्रिंट से मेरा फ़ोन खोला गया, मेरी आईडी से मेरी ही डेटिंग ऐप पे मेरा प्रोफाइल बना गया. बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, मेरी डेट भी फिक्स कर दी गई. और बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई, मेरे उस रेस्टोरेंट में फ़िक्स की जो मेरा और उसका फेवरेट हुआ करता था. जब मैंने क्वेश्चन किया तो मुझे बोला गया कि डर के आगे जीत है, तुम डर से भाग रही हो और डर तुम्हारे पीछे भाग रहा है, सामना करो. एक समय आता है जब आपको मूर्ख और दोस्तों से आर्ग्यू नहीं करना चाहिए. मैंने भी वही किया. डेट वाले दिन बैग उठा के, मेरा मन जितना भारी था उतने ही मेरे कदम भारी थे. मैं कार्टर रोड के कॉर्नर वाले रेस्टोरेंट में गई.
रेस्टोरेंट में कदम रखते ही मेरी सारी मेमोरीज वापस आ गई। वो टेबल जहाँ पे ऑफिस का बैग पटक के चाय की चुस्कियों पे हमने ढेरों बातें की थी, और वही फ्राइडे नाइट को वही टेबल टल्ली होके डांस टेबल बन जाती थी। मेरे अफेयर की शुरुआत होने से ब्रेकअप तक उसने सब कुछ देखा था। मैंने फ़ोन उठाया, स्क्रॉल किया और पॉप उसका फ़ोटो आ गया। मैंने कहा आहा, बरसों बाद लिफाफा खोला था, कमबख्त तेरी तस्वीर सामने आ गई। मैंने बस छोटा सा आंसू मेरे आँख से गिरा और मैं उसको पहुँच ही रही थी तो मेरे टेबल पे नॉक हुआ। हे, आई थिंक यू आर दिशा। मैंने पलट के देखा ऊपर तो एक बहुत ही वेल ग्रूम्ड, वेल ड्रेस्ड एंड नाइसली फ्रेग्रेंट बंदा खड़ा हुआ था। मैंने स्माइल करके उसके बैठने को बोला, वो बैठा। जैसे ही वो बैठा उसने मेरे से ढेर सारी बातें करना शुरू कर दी। अनलाइक बॉयज़, मैं थोड़ी देर तो अपने ब्रेकअप के जोन में रही, लेकिन मुझे अपने खुद के कैरेक्टर में आने में ज़्यादा देर नहीं लगी। फिर मैंने भी उसके साथ बहुत सारी बातें करना शुरू की और थोड़ी देर में हमारी जो मेज़ थी वो 4 कॉफ़ी, 2 कप चाय और ढेर सारी बातों से सज चुकी थी। बातें जब ख़त्म हुई वो उठा, उसने बोला आई थिंक इट्स टाइम टू लीव बट लेट्स स्टे इन टच, और वो चला गया। मैं भी उठी, अपना बैग उठाया और जो रेस्टोरेंट में गाना बज रहा था उसको गुनगुनाती हुई, और अब मेरे पैर में और चाल में थोड़ी लचक थी और मैंने उसको जाते हुए देखा और स्माइल करके मैं भी रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। पूछेंगे नहीं कौन सा गाना सुना था? एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया, एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया, प्यार होता 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 कई बार है, ये प्यार होता होता कई बार है। तो ये थी मेरी रिपीट लव स्टोरी। बाय द वे, मैं जेन जी और जेन अल्फा की मदर हूँ, तो आप लोग जो बोल रहे हैं ना वो मैं बखूबी समझ सकती हूँ कि आप यहाँ खड़े होके क्या बोल रहे हैं। Can we have a nice round of applause for her? That is so cool here. It's been so long since I heard the word affair. I don't know what has happened to language, but we don't use this word affair at all. Or we always have a negative connotation to it. But great. Can we have another round of applause for her? Such a lively storyteller. So nice, so nice. So, since we spoke about breakups, how many of you here write letters still? I do, on different boxes. Nice, this is interesting. Okay. Other than that, does anyone still write letters or anyone ever wrote letters? A lot. Amazing, amazing. So, 2 things. One is, if you guys agree, I'd read out a letter for you guys. 1. 2, so I do a solo show. It's called Letters Entirely. So, the concept around the show is that there are a bunch of 8 letters which I wrote to a lover after we broke up. The idea was every time I want to reach out to her and I know I can't reach out to her, I'll write her a letter. So that's the show around. So I do that. But to give you a glimpse of the kind of letters that are there, I have a piece over here. Are we all game for it? Yes. Awesome. So the title is To the Lover I Must Apologize. To the lover I must apologize. I am awfully in love with you even after you've left. I seek respite in writing apology notes, but never muster the courage to send them to you. This is the 23rd note. I have somehow managed to keep it mellow and not weep while I write this one. I made a mistake when I said I didn't love you. I suffer a habit of pushing people that I love too far. I didn't realize that until you decided to walk away. Until I had a congested feeling like juggling between the first 2 gears in Mumbai traffic.
I've lost you like the last time I saw clearly with my right eye. Whatever is left of us is a blurred vision. Is it too late to ask for forgiveness? I know I'm a tower of mistakes, but you are a restoration architect. Would you give us a chance? I will be the laborer. You just have to be the torch bearer. They say when you love, you don't leave. Will you return? I try to recollect, when did kisses start feeling like apologies? When did our silence start writing letters to each other? When did our hearts turn into walls with gaping holes? When did empty glasses replace floral vases in the house? I made a mistake and I kept building upon it to a point where I've perished everything we built together. This letter is not a justification. It is a plea for consideration. This letter is to tell you, I love you. I behold you in my eyes. I have an itching sensation in my fingertips whenever I think of your hair. I sense a flowing affection in the sound of your name. I'm a wanderer and you are the oasis. Every thought about us feels like throwing a coin in the Trevi fountain. It creates ripples of hope, but it also cripples my heart. My mistakes weigh heavy upon me as I write this letter, seeking reprieve from the guilt I've had for so long. I recollect your puppy dog eyes and run through the last bits of conversation WhatsApp managed to conserve. I don't understand how to end this note. I don't understand how to end this letter, just like I do not realize we're no longer together. I will leave it open like I keep waiting for you, hoping someday you will return, or at least forgive me. Still yours, Krishna here. Yeah. So from all the bubbly love, this just moved to some very serious zone. But never mind. Are we having a good time? And we're freezing. Can we do something about the AC? Okay, he's doing something, so I think you should have some respite in a while. But are we ready for the next act? Yes. We have the last three, I think. Yeah, are we geared up? Yeah. Same amount of enthusiasm? Can we start clapping for Rohit? Yeah? Hi guys, I'm Rohit Agnihotri. I have been in Mumbai from quite some time. I'm born and brought up in Kanpur. तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे करीब होते हैं लेकिन बहुत दूर होते हैं, दिल के करीब रस्तों से दूर. हम अक्सर नहीं कह पाते हैं कि शब्दों में उनसे कि तेरी कितनी याद आती है. तू पास होती तो क्या कह पाते, लेकिन आँख खुलते ही बहुत बार होता है बिस्तर से जब हम उठते हैं तो कुछ ना कुछ सोचते हैं और खुद से बातें करते हैं और शायद ये कहते हैं, सुबह सुबह उठा मैं तो देखा आसमां और तेरी याद आ गई. सोचा कि काश तू साथ होती, मेरे पास होती. अब पास ना ही सही, अल्फाज तो हम भेज ही सकते हैं अपने वहाँ जहाँ तू दूर बैठे हमें याद करती है. चलिए इन एहसासों के लिए कुछ अल्फाज. देखा तुझे, देखा जो आसमां मैंने तो तेरी याद आ गई. सोचा कि परिंदा भेज दूँ मैं अपना सलाम भेज के साथ उस देश, तो क्या हुआ तू जो नहीं है इस वक्त मेरे करीब. बोलता नहीं मैं ज़्यादा, लेकिन ना जाने तेरे सामने ये अल्फाज रुकते ही नहीं. पूछा किसी ने मुझसे कि क्यों तू करता है उसकी ख्वाहिश इतनी. पूछा किसी ने मुझसे कि तू क्यों करता है उसकी ख्वाहिश इतनी. जानता है ना तू जो चाहे तो पूरी कायनात हो जाए तेरी मुरीद.
अब ये दिल सुन रहा था एक कोने से और मुस्कुरा कर उसने जवाब दिया, ख्वाहिशें तो बिखर जाती हैं वक्त के साथ, मैं तो उसका ना जाने वाला वो एहसास हूँ और वो ज़िंदगी भर रहने वाली मेरी एक उम्मीद। बस दिल की यही बात सोचते सोचते ना जाने कब आँख लग गई और मैं सो गया। और फिर सुबह उठा तो देखा आसमान और तेरी याद आ गई। सोचा कि परिंदा भेज दूं अपने सलाम के साथ उस देश, तो क्या हुआ जो तू नहीं है इस वक्त मेरे करीब। थैंक यू गाइस, थैंक यू। यार क्या सही पढ़ा. And this is one thing very peculiar about your voice. It's like you know, radio में सुनते हैं वो, you have that I think it's a north thing or whatever, but हाँ, आकाशवाणी. Can we have another round of applause for him? No, but amazing. It didn't seem like your first time, because before the gig started, he came up to me saying, it's my first time and all. And bro, you didn't seem nervous. Not at all. You did very well. Awesome. We're coming towards the end of the show. We have 2 more performers, and I'm also taking some stage time because we have some time. And I'm really digging in with you guys. I'm having a lot of fun. Can we have a nice round of applause for all of you? You know, when I was thinking of your story, and you said that आप ही के दोस्तों ने आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से डेटिंग ऐप ओपन करके आपको ये सब कराया. अगर लड़का होता तो वो कभी कर ही नहीं पाते ये, बिकॉज लड़कों को मैच इतना जल्दी मिलता ही नहीं है. This joke was brewing in my head over there. But how many here are single, though, honestly? 1, 2, 3. Oh, nice. How many are fed up of dating apps? I like how she's like, oh, sorry, this is not my question. But anyway, I have a small piece for you called I'm Afraid You Don't Find Lovers These Days. Are you in for it? Yeah. Awesome. I'm afraid you don't find lovers these days. In the period of freshly cut vegetables, peeled pomegranates, and de-seeded melons, I'm looking for someone to accompany me through cutting open a watermelon from the beginning up to preparing the entire fruit salad. But I'm afraid you don't find lovers these days. In the period of instant messages, tweets, and Insta reels, I'm looking for someone willing to narrate their day, write me an elaborate note, sometimes unable to contain sharing the musings of the mundane. But I'm afraid you don't find lovers anymore. In the period of intellectual stimulation, iPhones, and anxious ambitions, I'm looking for someone willing to be silly, share bizarre imaginations, and hold my hand without worrying about being left behind. But I'm afraid you don't find lovers these days. In the period of AP Dillon, Shubh, and Badshah, I'm looking for someone willing to drink through a ghazal night, cling on to their shairis, and share their Chand Raat with me. But I'm afraid you don't find lovers these days. I'm afraid I'm the only one finding, but not getting. I'm afraid I'm the only one finding. In the period of situationships, dolls, and AIs, everyone has found their compromise, while I sit with an open heart and hope. But an open heart is only a tourist attraction for most people. It is fun till you don't have to witness the wear and tear of this place, till you don't have to contribute to its restoration. It is the rom-com after the end credits roll up. It is the boring camaraderie of every day. It is the calm after the storm. It is the silence without any suspense. It is the actual story. Hence, I'm afraid you don't find lovers these days. Thank you.
Great. Are we good to call the next person on stage? This guy had, I think he's written his pen name, so I'll have to go back, see and come. Give me a minute. Damn embarrassing. Great. Can we start clapping? Can we have Mr. Beparwa? Please. बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वक्त की थोड़ी पाबंदी है तो इसलिए इंट्रो तो नहीं दे पाऊंगा, पर आप लोग प्यार से या नफ़रत से हमको लवेरिया के मरीज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारी सारी शायरियाँ जो है वो थोड़ी सैड होने वाली हैं। ठीक है, जब भी हम कहेंगे ज़रा गौर फरमाइएगा तो आप लोग क्या बोलेंगे? इरशाद। ठीक है, तो ज़रा गौर फरमाइएगा दोस्तों। ये क्या सितम है कि तुझसे बिछड़कर भी संभला हूँ मैं। ये क्या सितम है कि तुझसे बिछड़कर भी संभला हूँ मैं। ये क्या लानत है कि मुझसे बिछड़कर भी बिखरी नहीं तुम। ये क्या सितम है कि तुझसे बिछड़कर भी संभला हूँ मैं। ये क्या लानत है कि ये क्या लानत है कि मुझसे बिछड़कर भी बिखरी नहीं तू। एक ही तो ख्वाहिश थी ना हम दोनों की जाना। एक ही तो ख्वाहिश थी ना हम दोनों की जाना। मैं तो कब का मर गया, साथ मरी नहीं तू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगली शायरी है कि वक्त के ऊपर है कि वक्त का तकाजा था, वक्त पर बदल गया। वक्त का तकाजा था, वक्त पर बदल गया। अब इस पे क्या लड़ना कि कौन जिंदा रहा और कौन मर गया। अब इस पे क्या लड़ना कि कौन जिंदा रहा और कौन मर गया। अह बेपरवाहे, जिसको जीना था वो जी गया और जिसको मरना था वो मर गया। बहुत शुक्रिया। अगली शायरी है कि हमारी ज़िंदगी का दर्द आप क्या ही समझेंगे। हमारी ज़िंदगी का दर्द आप क्या ही समझेंगे। जनाब, जिस उम्र में लोग अपनी ज़िंदगी शुरू करने का ख्वाब देखते हैं, उस उम्र में हम अपनी ख़त्म करने की सोचते हैं। और अगली शायरी ये है, आप ये सारे लड़के लोग ज़रूर रिलेट करेंगे कि मसला ये नहीं है कि कितनी बार टूटा हूँ मैं। मसला ये नहीं है कि कितनी बार टूटा हूँ मैं। मसला ये है कि कितनी बार तोड़ा गया हूँ मैं। और मैं दुखी ना रहता उनको छोड़कर ऐ बेपरवाह। और मैं दुखी ना रहता उनको छोड़कर ऐ बेपरवाह। मैं तो खुश हूँ कि उनकी तरफ से छोड़ा गया हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। और ये जो मेरी अगली शायरी है, ये शायरी तो है ही, उसके साथ ही साथ नसीहत भी है। अब भी गौर फरमाइएगा। किराए के मकाम में, ये मुंबई वाले सारे लोगों के लिए स्पेशली है कि किराए के मकाम में ज़्यादा सपने ना समझो ऐ बेपरवाह। किराए के मकाम में ज़्यादा सपने ना समझो ऐ बेपरवाह। ये मकान कितने भी खूबसूरत क्यों न हो, एक न एक दिन बिछड़ ही जाते हैं। वैसे ये शायरी केवल मकान के लिए नहीं थी। हाँ। और अगली शायरी ये है कि आखिर क्या जादू किया है तुमने इन पर। आखिर क्या जादू किया है तुमने इन पर। ये पगले अब भी तुझको भाभी बोलते हैं। आखिर क्या जादू किया है तुमने इन पर। ये पगले अब भी तुझको भाभी बोलते हैं। मैं बता बता के थक गया कि तू अब मेरे साथ नहीं। मैं बता बता के थक गया कि तू अब मेरे साथ नहीं। पर फिर भी ये कमीने मुझको छोड़ खैरियत तुम्हारी पूछते हैं। बहुत शुक्रिया। दो ही तो ऐब हैं मेरे, दो ही तो ऐब हैं मेरे।
और दो ही खूबी भी ऐ बेपरवाह है। दो ही तो ऐब हैं मेरे और दो ही खूबी भी ऐ बेपरवाह है। एक इश्क तो दूजी जंग, दोनों ही मैं आखिरी हद तक करता हूँ। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी शेर के साथ जो है कि मैं इजाज़त लूँगा। इसमें यह है कि कुल 7 मकाम होते हैं इश्क में ऐ बेपरवाह। कुल 7 मकाम होते हैं इश्क में ऐ बेपरवाह। दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत, जुनून एवं मौत, और मैं इसके 8वें मकाम पर हूँ, जिंदा लाश। बहुत शुक्रिया। Hi guys. Need a minute. भाई आपका नाम क्या है? मिस्टर बेपरवाह बताया तो। सॉरी, आई मेंट। वो सर उसमें अभी थोड़ा टाइम है। ओके, वक्त लगेगा। बढ़िया सर। कैन वी हैव अनदर राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम? थोड़ा टेंशन आ गई। एक खास आप ध्यान दे बोला तो लाइक ओके, बट यार गिवन द रेट ऑफ रियल एस्टेट, किराया बेस्ट इन एवरी वे, ट्रस्ट मी। पर ये सर स्पेशली किराए वो मकान के लिए था, इसलिए क्लियर कर दिया लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही। बट बढ़िया पढ़ा यार आपने। कहाँ से हो आप? सर यूपी आजमगढ़। ओके ओके, नाइस नाइस। Are we ready for the last performance of the evening? Yes. Yeah? Yes. Great. So please start clapping for AP the Trip. AP the Trip. All right. Good evening, everyone. So I'll start with, मैं आवाज़ दे रहा हूँ तुम्हें, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मैं आवाज़ दे रहा हूँ तुम्हें, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? क्या मुझे तुम किसी और में ढूंढ पा रहे हो? ये किस्सा एक दिल टूटे आशिक का है, किसी और दिन सुनाऊंगा। लिख तो दिया है दिल जले का हाल, किसी और दिन गाऊंगा। तो गाइज आई विल स्टार्ट विथ माई एक्चुअल। तो आज मैं लव पे, ब्रेकअप पे नहीं करना चाहता। मैंने इससे पहले सिर्फ एक बार ट्राई किया था, ओके, एंड आई हैव गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑन लव ब्रेकअप, बट आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. माय नेम इज EP द ट्रिप. आई एम अ म्यूजिशियन, आई एम अ कंपोजर, आई एम अ राइटर, ओके, and this is the second time I'm doing poetry, so it would be really nice if you would appreciate it. तो ऐसा है कि हम इंसानों की ना इच्छाएं बहुत होती है, ठीक है. तो मैंने कुछ कोशिश की है इच्छाओं पे लिखने के लिए. ऑलराइट, सो हियर इट गोस. यदि मैं छाँव की खोज में, यदि मैं धूप में चलता मुसाफिर, ज़िंदगी धुआं और ज़िंदगी रोज़ की, सच कहने वाले को कहते क्यों काफिर. यदि मैं दुख से कह कर पाता सभी को खुश, यदि मैं कह दूँ जो लगे जो कुछ, यदि मैं डरूँ ना डर से पूछ, यदि मैं मरूँ ना रब से पूछ, यदि मैं बन जाऊँ काबिल कामयाबी के, यदि मैं जान पाता जो मुझ में खामी है, यदि तो बड़ा तो बस तेरा नाम ही है, यदि सब गए तो फ़र्क पड़ा नहीं. आया अकेले और जाऊं अकेले में रोज़ तो घर, रोज़ की दुनिया अब यही है स्वर्ग, यही है नर्क. जानू ना कल को मौत के दर, जानू की मतलब के दोस्त इधर, जानू की लगे बहुत मौत से डर, जानू की जानू के बहुत से सच, जानू तू जाने मन पलटेगी अब. यदि मैं खुश होता थोड़ा सा आज, यदि मैं जा पाता नदियों के पार, यदि ये सोच हो दुनिया से बाहर, यदि ये कंधों पे ना होता भार, यदि मैं. तो गाइज ये तो इच्छाएं थी, ठीक है. तो इसके बाद मैंने सोचा कि मैं इन इच्छाओं का क्या कर सकता हूँ. तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं को एक साथ एक कलम के अंदर भर दिया. आज दुर्भाग्यवश मेरे पास वो किताब नहीं है, तो मैंने अपने मोबाइल में लिखा है, ठीक है. ये काफ़ी पुराना है, पर हो सकता है आपको पसंद आए. ये एक सवाल है,
तो मैं शुरू करता हूँ। मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा चरित्र क्या है, तू मेरा मित्र क्या है, सबसे सवाल क्या है। मैं अल्फाजों से पूछूं, कागज़ी कलम सब लिखता है। मैं जज्बातों से पूछूं, प्यार करना सचमुच मिथ्या है। मैं अखबारों से पूछूं, प्रश्न चिन्ह से सब बिकता है। मैं किताबों से पूछूं, ज्ञान सब ये दीमक विद्या है। दीवारों सा खड़ा मैं काफ़ी लड़ पड़ा, मैं अभी चल पड़ा। ऐनक मेरा ये टूटा चला, थोड़ा दिखता कम पर लिख दिया। थोड़ा सर फिरा, उठ कर गिरा, तू हारेगा सुनने मिला। ऐसा सिला मुझे क्यों मिला, क्यों दर्द दे ये इतना भला। मुझे सहने की आदत है पर मैं सह सह कर भी थक गया। मुझे कहना भी बहुत कुछ होता पर सब सुनकर रुक गया। मेरी आंखों से बहता है आंसू, मर्द हूँ पर इंसान भी, काबिल बनना है मुझे। तकलीफ़ में दबा मैं आदमी, लाजमी है क्या ये सब जो भी चल रहा मेरे साथ अब। मेरी आखिरी उम्मीद मिट गई मौला, कुछ तो क्या चुप क्यों तो रब। क्यों मैं हड़बड़ाया बड़बड़ाया, यंत्र हुआ मुझको कोड है। वरदान है या अभिशाप है, लिखना लिखते लिखते तोड़ दे। मुझे मार दे परवाह नहीं, मेरी आत्मा नरक से बोलेगी। मुझे जान ले या मेरी जान ले, मेरी जुबान ये बेड़ियाँ तोड़ेगी। अब शब्द ज्ञात थोड़ा दे दे ध्यान, पाखंड महारत ज्ञान रख। कोई सरल सोच का एक साथ, अखंड भारत तेरे साथ रख। All right, guys, thank you. That's my time. My name is AP The Trip. I think the kind of rhythm you had a very rap feel, but amazing bass, bro. And crazy voice. Can we have another round of applause for him? Because oh yeah. I was literally waiting for it to break down to apna time aayega. And no offense, bro. I mean, just fun. But yeah, you had a rhythm to it, and it sounded great. You didn't seem like a first time or second time, honestly. You seemed like you've been doing this. Please keep doing this. You're doing great. With this, we kind of come to the end of the show. I think you've been great. All of you have been exceptional. You all write lovely. Please keep writing, keep performing. My name is Krishna Iyer. You can follow me on Instagram. Plug in, please. Don't mind. You can follow me on Instagram. I keep performing in the city and otherwise. So you can see my content over there. But if in case you've clicked any of my photos, given how good I was, you can tag me on the stories, and I'd love to follow all of you, and I'd love to collaborate for some work with all of you. Can we have a nice round of applause for all of you guys here, please? Awesome. Can we have a nice round of applause for The Habitat? I think what I cherish the most about this evening is the fact that Habitat is back. And the open mics have started. Trust me, it's such a good feeling. It just makes me so happy. So I think before leaving, we'll have a group photo, and then we can all disperse. And thank you so much.